Hello, good afternoon, everybody. Today, in the series of ongoing video lectures of the Department of Shalakitandra, I am going to teach you the topic glaucoma. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अधिमंत चार प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ये अधिमंत को हम ग्लूकोमा से कंपेयर करते हैं और हताधिमंत जो है वो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम एब्सोल्यूट ग्लूकोमा से कंपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, प्राइमरी ग्लूकोमा जो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, देन सेकेंडरी ग्लूकोमा एंड एब्सोल्यूट ग्लूकोमा का स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोमा एक वास्ट टर्म है जिसमें हमें 3 फैक्टर्स मिलते हैं: रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, ऑप्टिक्स, nerve damage and visual field defects। तो हम अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। तो ग्लूकोमा coming to definition, glaucoma is eye disease in which the optic nerve is damaged in a characteristic pattern, which will cause visual impairment in the eye and may lead to blindness if not treated adequately. It is normally associated with increase in intraocular pressure. तो ग्लूकोमा वो आई डिजीज है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है इन अ कैरेक्टरिस्टिक फैशन, जिसके कारण विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है और अगर एजुकेटली ट्रीटमेंट ना की जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और ये नॉर्मली रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसी की डेफिनेशन में ocular hypertension included होता है, which is the term used when the intraocular pressure is constantly raised without any associated optic nerve damage। तो ocular hypertension वो कंडीशन है जिसमें इंट्राocular प्रेशर तो constantly raised रहता है पर optic nerve damage present नहीं रहता। Then normal tension glaucoma और लो टेंशन ग्लूकोमा होता है। इस केस में ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड एसोसिएटेड विजुअल फील्ड लॉस इज प्रेजेंट, दो इंट्राओक्युलर प्रेशर इज आइदर नॉर्मल और लो। इसमें इंट्राओक्युलर प्रेशर या तो नॉर्मल होता है या लो होता है, परंतु ऑप्टिक नर्व डैमेज और विजुअल फील्ड डिफेक्ट हमको मिलते हैं। तो ये फिगर 1 है, ये नॉर्मल आई और सेकंड फिगर में आई विद ग्लूकोमा दिखाई गई है। तो रेज इंट्राओक्युलर प्रेशर के कारण क्या है, डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व अकर होता है। देन क्लासिफिकेशन, first is congenital and developmental glaucoma. Primary glaucoma, which is of 2 types: primary open angle glaucoma, and second is primary angle closer glaucoma. Third is secondary glaucoma. Then coming to congenital glaucoma. Congenital glaucoma is a group of disorders associated with abnormal intraocular pressure due to developmental abnormalities of the angle of anterior chamber, causing obstruction to the drainage of aqueous humor.
तो ये वो कंडीशन होती है कंजेनिटल ग्लूकोमा जिसमें इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है अब नॉर्मली रेज होता है और जिसमें ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर में ऑब्स्ट्रक्शन एराइज होता है। Then clinical feature, what is photophobia? Then lacrimation, blepharospasm, ophthalmos, corneal edema, corneal enlargement, tears of Descemet's membrane. Descemet's membrane जो है कॉर्निया की फोर्थ लेयर होती है जैसा आपको याद होगा। Then optic disc cupping and atrophy. Then coming to its treatment, primarily surgical, which are performed after lowering intraocular pressure. उसका इसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है और वो तब परफॉर्म की जाती है जब इंट्राऑक्युलर प्रेशर को लो कर दिया जाता है। और टू लो इंट्राऑक्युलर प्रेशर hyper osmotic agents, acetazolamide and beta blockers should be used. तो acetazolamide के एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, ये ड्रग्स जो है वो इंट्राऑक्युलर प्रेशर को लो करती है। इसके लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो गोनियोटोमी। In this procedure, an incision is given in the angle between root of the iris and Scalvier's line. Success rate is 85%. तो इसमें इंसिजन ये दिया जाता है बिटवीन रूट ऑफ द आइरिस एंड स्कैल्वियर्स ring. दूसरा जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो है trabeculotomy. In this procedure, a new channel is created along the sclera flap margin. The aqueous flows from anterior chamber to subconjunctival space through it. It is useful operation when visualization is poor due to corneal clouding. तो trabeculotomy वो सर्जरी है जिसमें कि aqueous flow के लिए जो है अल्टरनेट रूट बना दिया जाता है ताकि एक्वस जो है वो एंटीरियर चैम्बर से सब कंजक्टिवल स्पेस में ड्रेन हो जाए। थर्ड टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर इज trabeculotomy combined with trabeculectomy, which is most frequently performed procedure nowadays. Then next is primary open angle glaucoma, the type of glaucoma in which there is no obvious systemic or ocular cause of rise in the ocular pressure. तो ये ऐसा टाइप है जिसमें कोई ऑब्वियस सिस्टमिक या ऑकुलर कॉज नहीं है जिसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो सके क्योंकि एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर ओपन रहता है। It is characterized by slowly progressive raised intraocular pressure along with cupping of optic disc and visual field defect. तो इसमें slowly progressive intraocular pressure होता है और जिसके कारण cupping of optic disc and visual field defect होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स जो है वो है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, तो ये हेरिडिटरी टाइप का हो सकता है। It is common after 50 years of age. Myopes and diabetics are more prone than history of steroid therapy. These are the risk factors of primary open angle glaucoma.
Then coming to symptoms, usually none. कोई symptom present नहीं होता. Visual field defect is present. Frequent change of glasses. तो primary open angle glaucoma में frequent changes of glasses होती है. Then इसके साइंस में raised intraocular pressure. Normally intraocular pressure 10 to 21 millimeter of Hg होता है. इसको एवरेज हम 15 आइदर प्लस 2.5 मिलीमीटर ऑफ Hg और माइनस 2.5 मिलीमीटर ऑफ Hg लेते हैं. Then visual field loss, then glaucomatous, optic disc changes. तो अब ये फिगर 2 है. इसमें नॉर्मल और ग्लोकोमेटिक्स ऑप्टिक नर्व में डिफरेंस देखिए. ग्लूकोमा में जो है ऑप्टिक अप टू डिस्क रेशियो इज इंक्रीज इन ग्लूकोमा. तो डिस्क रेशियो और ऑप्टिक कप रेशियो बढ़ गया है इसमें, जबकि यहाँ पे ऑप्टिक कप और ऑप्टिक डिस्क का रेडियस जैसा है. Then in this figure we can see due to raised intraocular pressure, damage to optic nerve takes place. Then next is primary angle closure glaucoma. The primary angle closure glaucoma, it occurs when the drainage of angle of the eye becomes blocked. इसमें angle of anterior chamber जो block हो जाता है. Intraocular pressure usually goes up very fast. और intraocular pressure जो है वो very fastly grow हो जाता है, goes up हो जाता है, grow हो जाता है. The pressure rises because the iris partially or completely blocks of the angle of anterior chamber. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि iris जो है वो partially और completely angle of anterior chamber को block कर देता है. And its clinical course is divided into 5 types or stages. The condition may not necessarily process from stage to next in an orderly manner. So these are latent glaucoma or incipient glaucoma. Then second is subacute or intermittent glaucoma. Third is acute primary angle closure glaucoma. Fourth is chronic primary angle closure glaucoma. And fifth is absolute glaucoma. Then coming to clinical feature of primary angle closure glaucoma, some or all of following clinical features may be present depending upon the above mentioned stages of primary angle closure glaucoma. तो इसमें से कुछ क्लिनिकल फीचर्स या सारे के सारे क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज. तो सिम्टम्स जो है वो है severe pain in moonlight, red eye, decreased or cloudy vision, often called streamy vision. तो streamy vision primary angle closure glaucoma में प्रेजेंट होता है. nausea and vomiting, halos around light. Then signs. Coming to signs, signs include very high intraocular pressure, that is more than 30 millimeter of Hg, corneal edema, narrow closed angle, इसमें angle of anterior chamber जो है narrow या closed होता है. Fixed or mid dilated people, atrophy of iris is present, optic disc changes are present.
So this is figure 1 and figure 2. In figure 2, occluded angle or closed angle of anterior chamber can be seen. Whereas in figure 1, angle of anterior chamber is open. Then in this figure we can see pathogenesis of primary angle closure glaucoma. First, high contact pressure between the pupillary water and the lens surface. Second, aqueous is trapped in the posterior chamber, pushing the iris fluid forward. Iris bomb is present, angle close is present. Then coming to investigations. The investigation include tonometry, that is for measurement of intraocular pressure, gonioscopy, slit lamp examination. Gonioscopy is done to measure the angle of anterior chamber. Then diurnal variation test, perimetry to detect visual field defect, provocative tests, especially water drinking test. तो इसमें वाटर ड्रिंक करके प्रोवोकेटिव मेथड के द्वारा इंट्राओकुलर प्रेशर टेस्ट किया जाता है. The nerve fiber layer analyzer, and in this figure we can see closed angle and the other parts of angle of anterior chamber like clearance canal, trabecular meshwork, etc. Then coming to treatment, myotics as pilocarpine and topical beta blockers, prostaglandin analog, alpha-2 adrenergic drugs, topical and oral carbonic anhydrase inhibitors. ये सारा मैं आपको ड्रग्स यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी में करवा चुका हूँ. इनके ड्रग्स की डिटेल्स. तो ये मैनेजमेंट चल रहा है. देन सर्जिकल मैनेजमेंट, आर्गोन और डायोड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी. उसमें ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं थ्रू लेजर मेथड, that is argon or diode laser method. Iridotomy, then trabeculectomy, then cyclocryotherapy, then artificial drainage shunt operations, canaloplasty, which is a non-penetrating procedure using microcatheter technology, and incision is made into the eye to gain access to spleens, canal, and opening it. And laser-assisted non-penetrating deep sclerectomy. Then coming to next type of glaucoma, which is compared with atademon, is absolute glaucoma. Acute or chronic primary angle closure glaucoma, if left untreated, results into complete visual loss due to glaucomatous or glaucoma-induced increase in
intraocular pressure leading to blindness. So, if primary angular glaucoma, whether acute or chronic, is left untreated, leads to complete visual loss due to glaucoma-induced increase in intraocular pressure leading to blindness. And absolute glaucoma is the end result of all types of glaucoma. Then coming to clinical features of absolute glaucoma, the eye is painful and blind. Anterior ciliary vessels and are dilated, and chronic circumcorneal congestion is present. So in this case, anterior ciliary vessels are dilated and congestion of chronic ciliary circumcorneal is present. So chronic circumcorneal congestion is present. When cornea is hazy, edematous and insensitive. Epithelial bullae and filaments may develop. Very shallow anterior chamber. Atrophic patches may present on the iris. Pupil is dilated and immobile. The optic disc is wide and deeply accelerated with optic atrophy. तो optic disc जो है वो white हो जाती है और deeply accelerated हो जाती है due to optic atrophy. Eyeball becomes stony hard due to very high intraocular pressure. इसमें intraocular pressure इतना बड़ा आता है कि eyeball जो है stony hard हो जाता है. In this picture we can see the changes due to absolute glaucoma. Then coming to its treatment part. Laser or cyclodestructive procedures may be used to low intraocular pressure. In this case also laser or cyclodestructive procedures are used to low intraocular pressure. साथ में पेन को रिलीव करने के लिए रेट्रोबल्बर इंजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल may be given. Then enucleation of eyeball is indicated. If the pain is not relieved through conservative methods. और अगर conservative methods से जो है पेन कम नहीं होता है, रिलीव नहीं होता, तो enucleation of the eyeball किया करते हैं. Then coming to secondary glaucoma. Secondary glaucoma is a disorder in which rising intraocular pressure is associated with some primary or ocular disease. तो ये secondary glaucoma जो किसी primary या ocular disease के कारण arise होते हैं. इसके types जो हैं वो हैं inflammatory, traumatic, phacogenec, neovascular, and steroid induced. Then their management of secondary glaucoma include treatment of the cord. So thank you. Thank you very much for listening to the lecture. तो इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा हुआ है definition of glaucoma, types of glaucoma, then clinical feature of different kinds of glaucoma, that is congenital glaucoma, primary glaucoma, that is primary open angle glaucoma, and primary angle closure glaucoma, then absolute glaucoma and secondary glaucoma. Their treatment methods, either whether surgical or conservative methods. Then we have also
seen through different diagrams, pathogenesis, then how and in which method the angle of anterior chamber is blocked, or in primary open angle glaucoma, what are the causes though angle of anterior chamber is open. So we have studied these things in uh, this lecture. So now Adiman and Atadiman topics are complete according to with their comparison as per modern topics. That is Adiman as glaucoma, Atadiman as absolute glaucoma. So thank you. Have a nice day. Thank you for listening to the lecture. Thanks a lot for giving your valuable time. Have a nice day. Good afternoon. We'll meet again with another lecture. Thank you very much.